हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आई एम डॉक्टर जी। इस वीडियो में बीटीसी के क्विक एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ सोलाना और एडीए की बात करेंगे बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन दीज टू पर्टिकुलर टोकन। सो आप बीटीसी का अगर ये देख रहे हैं कि डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे इट इज़ शोइंग अ डाउन ट्रेंड हेयर। सो एज यू नो कि इट वेंट अप टू 52, ब्रोक डाउन देयर और उसके बाद पुट प्रेशर एंड इट मेक्स इन ऑन ट्रायंगल। यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऑल टाइम हाई बना के एंड नाउ अगेन इट्स ऑन इट्स करेक्शन। डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इस वक्त एक वेज बना रहा है। सो इफ़ यू सी ऑन द अदर इंडिकेटर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड लाइक टू सी दिस वन ऑन द एमए रिबन। एमए रिबन में अगर आप इसको देखें करंटली तो इट्स होल्डिंग अप इट्स द फर्स्ट इवन जो इसका EMA रिबन अगर आप ये देख रही हैं 20, तो इसको भी बड़ी अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। इट्स मच अबव देयर बट अगेन एज यू सी इन द पास्ट ऑन अ डेली चार्ट। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें रिबन को इसने टच किया, टच करने के बाद अगेन इट जम्प्ड अप, अगेन टच्ड, अगेन जम्प्ड अप, अगेन टच्ड, इट वेंट इनसाइड इट, अगेन जम्प्ड, अगेन वेंट डाउन देयर, इट ब्रोक डाउन। फंडामेंटल न्यूज़ चाइना की उसमें थी एंड अगेन वेंट अप डाउन देयर। सो फ्रॉम वेयर आई एम प्रेडिक्टिंग एंड seeing on EMA ribbon as following the pattern, might be it will go further down up to 57 to 58 के लेवल एंड देन इट विल मे बी थोड़ा सा और इसके रिबन्स के बीच में और उसके बाद इट विल बाउंस बैक। बट अगेन दिस पोजीशन अराउंड 57,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन टू होल्ड अप दिस पोजीशन। सो अगर आप इसको क्विकली बाकी इंडिकेटर्स पे भी इसका देखें, विच वन ऑफ माई फेवरेट इज़ MACD 1 आवर के चार्ट पे, तो MACD इट्स नॉट शोइंग अ वेरी गुड साइन इन विच डाउनवर्ड ट्रेंड हैज़ जस्ट स्टार्टेड विद ब्लू लाइन। अगर इसको क्रॉस करेगी तो उसके बाद फर्दर इट विल गो डाउन एंड इवन द कैंडल्स आर ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम हेयर। और इसके अलावा अगर आप इसको RSI पे देखें तो RSI पे इट इज़ अगेन आवर बॉट एंड उसके बाद दोबारा नीचे एंड करंटली इट्स अराउंड 60-61 बट अगेन शोइंग द डाउनवर्ड trend there. So for me, I think BTC will go down furthermore as per technical analysis I'm talking about. Okay, so इसमें भी ये down trend जो बना रहा है और इसको it should break from there and for breaking it need a good volume. So if you see the volume right now, volume is actually decent enough, but I think they need a good push to break up this downward trend and then it will go further upward. But again the prediction which we did before on this channel, जो किसने इस ट्रेंड को तोड़ा था और इसकी बेस को, it has achieved that one. Again I'm looking forward to actually break this upward trend and then this will go prediction line जो बेस ऑफ कि आपका जो पोल है इसके ट्रेंड लाइन का and it will go further up to this one. It broke actually and it will go up to around 78,000. So I'm still very bullish on this thing, but right now I think for a short period of term Bitcoin will go further downward और अपनी जो प्रीवियस इसकी 57-58 की जो रेजिस्टेंस थी, जो अब इसकी सपोर्ट बन गई, इट विल रीटेस्ट अगेन एंड देन इट विल बाउंस बैक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड अगेन। सो अगर आप इसके बिगर पिक्चर में भी इसको अगर देखें तो दिस इज़ हाउ द मार्केट गोज एक्चुअली। इट पुट प्रेशर हेयर, इट ब्रोक अप देयर एंड देन अगेन इट वेंट डाउन, रीटेस्टेड नॉट एग्जैक्टली देयर बट बिकॉज यहाँ पे इसने एक अपना नया एंगल बना जो ट्रेंड बना लिया था। उसके बाद अगेन इट पुट प्रेशर देयर, broke out there and it didn't take the correction and then went up. Ideally वो सिनेरियो होता, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली ये बुलिश हो गया। माइट नाउ अभी ये थोड़ी सी और मज़ीद यहाँ पे करेक्शन ले 57-58, इट माइट टच डाउन देन इट विल गो अगेन और इट्स बुलिश ट्रेंड ऑल द वे टू आवर टारगेट ऑफ 78। तो अगर आप बिटकॉइन की करंट कंडीशन भी देखें तो 1 वीक पे 15 बाय बट 1 मंथ पे इसका स्ट्रॉन्गली बाय के आपके सिग्नल आ रहे हैं एंड ऑन द 1 डे इफ़ यू सी 13 it's not that strong one and if you see further on the short period 4-hour neutral, which is not a good sign. So moving on, the ADA is actually, I was looking into the chart and it's going into the very critical situation right now because 1 day का अगर आप ये चार्ट इसका देख रहे हैं तो 1 day के चार्ट में it has made its own triangle और जिसको it will break around as per this technical analysis 31st October it should break this
एंगल एंड फ्रॉम वेयर वी कैन सी कि अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इफ़ यू सी द पोल ऑफ दिस ट्रेंड लाइन तो इट कैन गो from here if it breaks and it go down to 1.026 or it can go upward to all the way of 3.4 level. So this is all the technical analysis I'm predicting from here, but again आपको ये पता है कि इस एरिया में काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहे हैं and ADA has become much boring. What I am seeing here is concerning sign is this कि इसका वॉल्यूम जो है that is very very weak actually. अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करें, volume is not coming up, which is again not good for ADA in the long term. So let's see on the MAC, on the 1 day के चार्ट पे अगर आप MAC डी की बात करें तो उस पर भी इट शोइंग अ स्लाइट बुलिश सिग्नल हेयर, बट अगेन एज ए सेट के वॉल्यूम कम है, स्पेशली वी हैव टू फॉलो द BTC मूवमेंट के वो के साइड पे ट्रेंड करता है, तो अगेन इट्स अ लिटिल डाइसी राइट नाउ. एंड इफ़ यू सी इट ऑन द RSI और RSI पे भी इट्स ऑन द it's in a good position actually. From here it can go upward, but again it will all depend on the BTC कि BTC आपका कैसे आने वाले एक या दो दिनों में बिहेव करता है. एंड इफ़ यू सी दिस वन ऑन द MA ribbon chart, so MA ribbon chart में it is showing a downtrend there. Already it crossed over ये येलो लाइन जब ऊपर आई तो इसने बुलिश सिग्नल शो किया. It went all the way up from there and again it went down inside the MA ribbon, broke down there, but it is consolidating in this particular area. So जब तक आपकी ये जो blue line again ये turnover यहाँ पे नहीं होती, we cannot see ADA moving further up, क्योंकि ये भी येलो लाइन इसकी नीचे आ रही है. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अगर ADA के अगर उसमें बाइंग सिग्नल और उसमें देख रहे हैं ऐसा जिसका कोई इवेंट भी नहीं आ रहा रिसेंटली, और 1 वीक के चार्ट पे नॉट अ स्ट्रॉन्ग बाय साइन, 12 साइन. 1 डे के चार्ट पे इट इज़ actually on a selling sign, because 1 day chart पे it doesn't look very good, which I was talking about on a little time frame. अगर 4 hours पे भी देखिए again the sell signals are there, and if you see on the 1 month in the long term it is again buy, but not very strong buys prediction there. So talking about the last but not the least, which is Solana, it's showing a great potential in recent terms. So अगर ये कल मैं अपने ग्रुप में भी इसकी मैं डिस्कशन कर रहा था, so it has actually shown a very good growth in term कि अगर आप इसका ये चार्ट देखें तो EMA ribbon से it's much up, it went from there up, took correction, came inside the ribbon, again broke, again there, again went up, might be considering the BTC, again it will come down furthermore here, or the level of I can see from here कि ये शायद 180-184 के लेवल पे दोबारा आए और उसके बाद कंसोलिडेट करके again it will broke out. So long term अगर आप इसकी let me remove EMA ribbon. सो अगर इसमें लॉन्ग टर्म में देखें तो इसने अपना ये जो एक ट्रेंड था इसको ब्रेक किया, एंड दिस लाइन एक्चुअली वाज दिस द पोल ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट द लेवल आई एम सीइंग इज एज पर टेक्निकल एनालिसिस इज एक्चुअली 264, विच आई स्पोक अबाउट ऑलमोस्ट 2 months बैक ऑन द सोलोना, जिस पे मेरे चैनल पे वीडियो के 265 वाज माय प्रेडिक्शन एट दैट टाइम, एंड इट्स फॉलोइंग दैट थिंग अगेन. लेकिन अगर ये लेवल अभी यहाँ पे जो 215 और 17 की रेजिस्टेंस है, इट विल इफ इट ब्रेक from there then it will go all the way up to this level, but again we have to see the movement of BTC के BTC कैसे वहाँ पे फॉलो करता है. So if you see it at the MACD on the 1 day chart, I think this is only one of the coin which is showing such good bullish signal, in which very bullish actually on the day sign, and volume is coming up in this Solana too. So if you see on the RSI is RSI, it's slightly actually it's still decent 72. It's still got like a
लॉट जूस इनसाइड, क्योंकि जब तक आपका 80-90 तक नहीं करता, विच इज़ साइन ऑफ आवर बोर्ड, सो आई थिंक इट्स इन अ गुड पोजीशन टू सो देयर. सो सोलाना इज़ ऑल गुड टू गो. इवन BTC ड्रॉप डाउन वी हैव टू सी. और अगर 1 डे के चार्ट पे अगर आप इसको प्रेडिक्शन इसकी देखें तो इट्स शोइंग 15 बाइंग predictions, and on the 1 week strongly by 13. So Solana for me it's good to go right now. और आने वाले इवेंट्स में ऐसा चीज़ का कोई इवेंट है नहीं. 23rd को टोकन 204 इन हांगकॉन्ग, मे बी अ लिटिल बिट increase in the market with this. लेकिन उसके बाद the main event which I'm looking forward is link integration on the Sol, जिस वजह से link की price भी by the December month increase होगी. So I'll bring more of such events which are coming up, especially talk and ऑन हारमोनी से रिलेटेड. हारमोनी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है. यू कैन गो ऑन टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच दैट वीडियो. अगर आपने नहीं देखा तो डॉक्टर ट्रेंड के नाम से ये है. और इसमें अगर आप इसके किसी भी वीडियो की डिटेल्स में चाहें, सो यू कैन गेट ऑल दी रेफरल IDs हेयर. बाइनेंस पे अगर आप इससे बनाएंगे और बाकी अकाउंट्स पे बनाएंगे, यू विल गेट अस 10% ऑफ एक्स्ट्रा बोनस देयर. एंड व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम का ग्रुप है. आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लिक को लिंक करके, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. And we are doing a technical analysis there, and soon I'm going to start a live session on my channel too. So this is all the prediction for the top 3 coins pick for me: Solana, ADA, BTC. Watchful for the BTC movement, क्योंकि BTC for me on this technical analysis is not looking very comfortable position, but एज़ यू नो कि क्रिप्टो सारी आपकी फंडामेंटल न्यूज़ पे जाती है. कोई एक अच्छी तगड़ी सी को फंडामेंटल न्यूज़ आ गई तो इट कैन पिक अप फ्रॉम देयर बैक रेदर देन गोइंग डाउन, टेस्टिंग अराउंड दिस रीजन, एंड देन वी विल सी इट ऑल द वे अप. सो इसकी अगर लास्ट इसकी वो देख लें, सपोर्ट देख लें तो ओके. सो द सपोर्ट इज़ एक्चुअली 56-57. वही जो मैं बात कर रहा था कि ये रीजन इसका 57 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको होल्ड करना इसका ज़रूरी है. सो माइट इट विल गो डाउन देयर एंड देन इट विल ऑल द वे अप टू अवर प्रेडिक्शन विच वी हैव मेड. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. See you in the next video. Until unless, take care of yourself. Love, peace and care.